Hello everyone. In today's lecture we are going to cover this topic quadratic equation and the very first subtopic of this chapter where we will learn how to find the value of x where x is an input in a quadratic equation. Let's see an example. An example like this: x square minus x minus 1 equals to 0. So it's a simple quadratic equation, right? And when I say quadratic equation, 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है. 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यानी x की वैल्यूज निकालना हमने सीखा था. बट आई थिंक सबसे बेसिक अप्रोच जो तुमने सीखी थी वो थी स्प्लिट द मिडिल टर्म, ट्राई टू फैक्टराइज इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ट्राई दिस, पॉज द वीडियो, ट्राई दिस. आई कैन बेट यू नॉट. देखो, तुम्हारे एफर्ट्स पर और तुम्हारे टैलेंट पे मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना मुश्किल है. एंड द रीजन इज दिस इक्वेशन हैज गॉट इररेशनल रूट्स. अगर ये इंटीजर रूट्स होती हैं इसकी, अगर इसके पास रैशनल रूट्स होती हैं, बड़े आराम से हमने फैक्टराइज कर लिया होता. सो व्हाट कुड बी अनदर अप्रोच, व्हाट कुड बी ए बेटर अप्रोच टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स in such quadratic equations, in any quadratic equation? Do we have a formula? Yes, we do have. This one. What is the name of this formula? Quadratic formula. And what this formula is all about, if you have a generic quadratic like ax square plus bx plus c equals to 0 and you want to find the value of x, then x equals to minus b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. ऊपर देख लो कुछ लिखा हुआ है, a not equal to 0. Why a is not equal to 0? What if a becomes 0? This will not be a quadratic anymore, and if you look at this formula, there is a in denominator. That tells you this formula is going to fail. So obviously if we are talking about a quadratic, we are talking about a second degree polynomial equation, and to make sure that we have a second degree quadratic, second degree polynomial, a should not be equal to 0. So now things become actually very easy. You have this formula, you have this question, you have the values of a, b and c, the coefficients. Plug in the values of a, b, c in this formula, find the value of x. चलो घर चलते हैं, खत्म हो गई बात. नहीं, एक मिनट, ये फॉर्मूला आया कहाँ से गया भाई? इस फॉर्मूले को डिराइव तो कर लें, राइट? तो इस फॉर्मूले को डिराइव करने के बाद फिर उसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं. अब फॉर्मूले को डिराइव करते हैं. ओके, सुनने में तो काफी डिफिकल्ट काम लग रहा है. और चलो पहले क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं. क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. और जैसा मैंने कहा ए नॉट इक्वल टू 0, जिससे क्वाड्रेटिक रहे. The very first step that comes after writing this quadratic would be divide by. ए से डिवाइड कर दो, जिससे कम से कम हमको एक जो स्क्वायर वाली टर्म है वो प्योर एक स्क्वायर वाली टर्म मिल जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, राइट? सो डिवाइड बाय ए एंड डिवीजन बाय ए इज अलाउड बिकॉज ए इज नॉट 0. यू कैन डिवाइड बाय एनी टर्म विच इज नॉट 0, राइट? सो डिवाइडिंग बाय ए टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, and for some reason I'm going to write x first and b by a next. You won't question me because ab is same as b, it is commutative, right? कोई दिक्कत तो नहीं है. आगे देखो, ये क्या हो जाएगा? c by a. ये क्या हो जाएगा? 0 by a. नहीं, 0 लिख दो ना इसको, ये 0 हो गया. Okay. Now when you look at x square, when you look at the linear, I mean x power 1, 2 degree, 1 degree, कोई आइडेंटिटी 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड की याद आ रही है? Look at this identity. a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. And how these two are connected? See, x square, a square. We have x, we have a. Now you'll say 2 कहाँ पर है? 2 तो है ही नहीं भाई. तो कोई दिक्कत हो ना, 2 ले आओ ना. ये देखो, अब तुम कहोगे यहाँ पे 2 जबरदस्ती लिख दिया, तो 2 से डिवाइड भी कर देते हैं. अब जरा रिलेट करो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 2 x same as a. What about this term? If you compare the formula to this equation, x square is a square 2ab, the b there is comparable to b by 2a here. Now if I want to complete the square, look at these two terms. These two terms are identical, a square plus 2ab. I need the third term. And what is that third term? It is b square. So b square
instead of writing b, we are writing b by 2a. So what should we add to both sides of the equation? Both sides, because obviously we do not want to change the values here. So what should we add to complete the square? B square, b by 2a whole square, right? So we are going to add b by 2a whole square both sides. Sorry, b by 2a whole square both sides, and I'm shifting this c by a simultaneously. So I'm shifting this c by a term, b by 2a whole square both sides, and minus c upon a. Now, after doing this, you know why we did it. हमको एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए था, a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट? ये a प्लस बी होल स्क्वायर तो लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. So this can be written as x plus b by 2a whole squared. राइट हैंड साइड, अरे एलसीएम लेना सबको आता ही है भैया ना, एलसीएम ले लो यार. क्या होगा, 2a होल स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया, और b स्क्वायर न्यूमरेटर में हो गया, और यहाँ देखो a and this is 4a square, so this will obviously become 4ac. So b square minus 4ac upon 4a square. What will be the next step, and where have we reached? I think now you can sense, right? We have x plus b by 2a. We want to find the value of x, and now x is there but in a single expression, right? So if somehow I can remove this square from this term, I can directly find the value of x. And to do that, the process is fairly simple. If this is square, then x plus b by 2a will be equal to, do I need to tell you that if a square is 4, then a is equal to plus minus 2. So plus minus square root b square minus 4ac whole divided by 2a. And obviously this one more step and you have the value of x, and you have derived the quadratic formula, right? So x equals to minus b plus minus root over b square minus 4ac whole divided by 2a. That's it. So now you have this formula, the same formula, we have derived it. Let's solve this quadratic equation with the help of this formula. Alright, so what is a? If you compare this generic quadratic to this example, what is the value of a? You see, a is 1. What is the value of b? You see, b is minus 1. And what is the value of c? C is also minus 1. Right? Look at this formula and tell me what will be the value of x. X will be equal to minus b. So minus of minus 1, it is plus 1, and square root of b square. So b square is minus 1 square, which is 1, minus 4ac. So a is 1, c is minus 1, this will become plus 4 and divided by 2. So the values of x. Are you still thinking about splitting the middle term? Look at the values. X की value आई है 1 plus minus root 5 by 2. तो अगर किसी को it would have been a miracle अगर किसी ने सोचा हो कि इस 1 को मुझे 1 plus root 5 by 2 और 1 minus root 5 by 2 में split करना है. अगर ये तुम्हारे दिमाग में आता है तो don't use that formula. But I think you have understood now that we have a very nice formula, the quadratic formula. So learn this formula and now you can solve any quadratic. Thank you.